Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Today we are going to explore the facts about the entitled theme, Schedules of Reinforcement. As we know that reinforcement is simply defined the environmental substance or event which accelerates the rate of responses from an organism. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, एज पर द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, reinforcers are being considered the heart of learning. It means reinforcement plays important role in order to make the learning process possible. एक वर्कर काम नहीं कर सकता है जब तक कि हम उसे reinforcement in the form of wages नहीं दे सकते हैं. एक लर्नर तब तक टास्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट नहीं हो जाएगा जब तक कि उसे टीचर या इंस्टीट्यूशन रिवार्ड या reinforcement नहीं देगी. रिवार्ड और reinforcement in the form of good grades, in the form of encouragement, in the form of scholarships, in the form of other monetary benefits. So it means it is actually the reinforcement which motivates an individual to work or to perform any type of task. That is why operant conditioning theory believes how different reinforcers pushes an individual to act in a desired manner. Now, there are the various schedules of reinforcement. Number 1, continuous schedule of reinforcement. Continuous schedule of reinforcement is that schedule of reinforcement in which we are giving the reinforcement continuously. On the other hand, we can say that on every correct response, the organism is given the reinforcement. So this schedule of reinforcement is known as continuous schedule of reinforcement. I mean to say you, एक organism को every correct response पे रिवार्ड मिलता है या reinforcement दिया जाता है तो इसे continuous reinforcement schedule कहते हैं. For example, when the learner gives correct response to the teacher gives reinforcement on every correct response. जितने की correct response एक learner देता है और टीचर भी हर एक correct response पे reward या reinforcement देता है. So we can say that this is called the continuous schedule of reinforcement. जिस तरीके से B.F. सिकनर ने एक एक्सपेरिमेंट रैट और पिजन पे किया, जब भी रैट या पिजन करेक्ट रेस्पॉन्स देता था, हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे B.F. सिकनर पिजन और रैट को रिवार्ड और reinforcement देता था in the form of food. So we can say that this is known as continuous schedule of reinforcement. Dear students, in nutshell, we can say that continuous schedule of reinforcement is that reinforcement schedule जहाँ पर हर correct response पे एक organism या एक individual को reinforcement और reward मिलता है. Number 2, partial schedule of reinforcement. Partial schedule of reinforcement is that schedule of reinforcement in which organism is given sometimes reinforcement and sometimes not. यानी कि organism को कभी reinforcement या reward मिलता है, कभी reward और reinforcement नहीं मिलता है. So that schedule of reinforcement is known as partial schedule of reinforcement. जब एक learner कोई टास्क परफॉर्म करता है तो टीचर उसे हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे
रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट नहीं देता है। जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे एक लर्नर को रिवार्ड मिलता था, लेकिन इन केस ऑफ पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्नर को हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर। वो टीचर कभी रीइंफोर्समेंट देता है और कभी लर्नर को रीइंफोर्समेंट नहीं देता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज partial schedule of reinforcement. Same is the case in case of the experiment which is conducted by B.F. Sickner on both pigeon and rat. जब एक रैट लिवर को प्रेस करता था तो एक्सपेरिमेंटर, आई मीन टू से यू B.F. Sickner, रीइंफोर्समेंट रिलीज करता था और चूहा जो था या पिजन वो अपनी हंगर नीड को सेटिस्फाई करता था। लेकिन हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे पिजन और रेट को रिवार्ड नहीं मिलता था इन द फॉर्म ऑफ फूड। समटाइम्स एक्सपेरिमेंटर विदहोल्ड द रीइंफोर्समेंट, समटाइम्स एक्सपेरिमेंटर रिलीजेस द रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड। सो दिस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट is known as partial schedule of reinforcement. In nutshell, we can say that it is that type of reinforcement जब एक ऑर्गेनिज्म को रिवार्ड कभी मिलता है और कभी रिवार्ड नहीं मिलता है। भले ही एक ऑर्गेनिज्म करेक्ट रेस्पॉन्स हर समय क्यों न देगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटर जो है वो कभी रीइंफोर्समेंट को देता है और कभी रीइंफोर्समेंट को स्टॉप करता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, और इट इज आल्सो called the intermittent schedule of reinforcement. Intermittent simply means sometimes you withhold reinforcement and sometimes you leave or release the reward or reinforcement. Dear students, partial reinforcement schedule or intermittent schedule of reinforcement is further classified into two categories. Number 1, interval schedule of reinforcement. Number 2, ratio schedule of reinforcement. Interval schedule of reinforcement is also categorized into two categories: fixed interval and variable interval. Ratio schedule is also categorized into two categories: fixed ratio and variable ratio. Dear students, we will discuss all the schedules of reinforcements one by one. Number 1, fixed interval schedule of reinforcement. Fixed interval schedule of reinforcement is that schedule of reinforcement in which the individual has given the reinforcement after some fixed period of time. यानी कि ऑलरेडी एक पीरियड ऑफ टाइम फिक्स किया होता है, फिर एक इंडिविजुअल को रीइंफोर्समेंट मिलता है। उससे पहले एक इंडिविजुअल को रीइंफोर्समेंट नहीं मिल सकता है। देयर इज ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, सो वी कैन से दैट इट इज नोन एज फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉई। फॉर एग्जाम्पल टीचर को एक महीने के बाद हर एक फर्स्ट पे तनख्वाह मिलती है, चाहे 40,000 की, 50,000 की, 70,000 की, लाख की, कितनी मिल जाएगी एज पर द डिजिग्नेशन। सो फिक्स्ड पीरियड इज दैट 1 month द एम्प्लॉई gets the salary. I mean to say you teacher gets the salary after 1 month. So that is the fixed period of time. And reinforcement schedule is known as fixed interval schedule of reinforcement. दूसरी एग्जाम्पल हम इस तरीके से कह सकते हैं, एक लर्नर को एक हफ्ते के बाद रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट मिलता है, यानी कि एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद टीचर रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट एक लर्नर को देता है। नंबर 2, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल।
The reinforcement is given after an unpredictable amount of time. For example, surprise visit of school inspector in school, boss checks work at industry, email message delivered randomly. These are the various examples of variable interval schedule of reinforcement. यानी कि जैसे कि हम सब जानते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल टाइम पे मिलता है, यहाँ पर डिसाइडेड टाइम नहीं है। जिस तरीके से फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में टाइम फिक्स्ड था, 30 डेज बाद, एक हफ्ते के बाद रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट मिलता है। बट सो फार एज वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज कंसर्न, ये वो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है जहां पर एक मुकर्रर पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है। इट इज अनप्रिडिक्टेबल। यहां पर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी कंटिन्यूअस मोटिवेशन हो जाती है लर्निंग में। दैट इज वाई वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अक्सर बेशतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और नेट के हिसाब से भी पूछा जाता है और सेट के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में से कौन सा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट स्ट्रांग है? ऑप्शन वहाँ पर पार्शल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म और लर्नर की मोटिवेशन कंटिन्यूअसली होती रहती है। दैट इज वाई वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम जानते हैं जब एक सरप्राइज विजिट बॉस करता है एक इंडस्ट्री को, जिस तरीके से एक स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल को सरप्राइज विजिट करता है ताकि वो देखता है कि वहाँ पर काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। किसी भी एम्प्लॉई को पता नहीं होता है कि आज हमें इंस्पेक्शन होने वाला है। सो दिस इज नोन एज वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। Ratio schedule of reinforcement is also categorized into two categories. Number one, fixed ratio schedule of reinforcement. Number second, ratio variable schedule of reinforcement. As we know that ratio simply means how much one thing is bigger than or smaller than another thing. That is known as ratio. कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज से कितना बड़ा या छोटा है उसे हम कहते हैं रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, वी आर मेकिंग द कंपैरेटिव एनालिसिस इन बिटवीन द टू थिंग्स, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कंपैरिजन के दौरान एक चीज दूसरी चीज से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स and that basket contains 6 oranges and 4 apples. So we can say that ratio will become 6:4, 6 oranges and 4 apples. Now we will discuss one by one what is fixed ratio schedule of reinforcement and how fixed schedule of reinforcement is different from the variable ratio schedule of reinforcement. Fixed ratio schedule: when the reinforcement is given after a fixed number of responses. For example, the student has given the 6 correct responses and has reinforced only once. The ratio will become 6:1. जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में एक लर्नर को या एक इंडिविजुअल को फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस पे रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लर्नर की बात करेंगे, एक लर्नर ने 6 करेक्ट रेस्पॉन्सेस दिए और 6 करेक्ट रेस्पॉन्स पे उसे एक बार रिवॉर्ड मिल गया, तो हम कह सकते हैं रेशियो विल बिकम 6:1। कोई और लर्नर होगा जिसने 4 करेक्ट रेस्पॉन्सेस दिए
और 4 करेक्ट रेस्पॉन्स देने पे द टीचर ने उसे 2 बार रिवार्ड दिया, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो विल बिकम 4:2. नाउ नंबर 2, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल. When the reinforcement is given after an unpredictable number of responses, for example, gambling and lottery games, the learner gets rewarded one time after 3 correct responses, second time 6 correct responses, third time 7 correct responses. It is that schedule of reinforcement in which the individual is given the reinforcement or reward after an unpredictable number of responses. For example, gambling or any lottery game. जैसे कि हम सब जानते हैं, gambling is being considered the prohibited game. क्यों gambling को prohibited game कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी certain या determined नहीं होता है. जो भी दाव खेलने वाला है उसे कोई भी certainty नहीं होती है कि मैं जीत जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा. जो दाव खेलने वाला होता है वो सट नहीं होता है कि मैं कब जीतूंगा. कभी दाव खेलने वाला जो है वो 7 रेस्पॉन्स देने के बाद रिइंफोर्समेंट हासिल करता है या जीतता है. कभी वो 9 रेस्पॉन्स खेलने के बाद वो जीतता है. कभी वो 20 रेस्पॉन्स खेलने के बाद जीतता है. कभी वो 21 रेस्पॉन्सेस देने के बाद की रिवार्ड हासिल कर लेता है. इसीलिए गैम्बलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड गेम मानी जाती है, बिकॉज इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, नथिंग इज सर्टेन. तो इसीलिए बड़े बड़े जो जुआरी होते हैं, अगर उनमें करोड़ों की भी प्रॉपर्टी होती है, अरबों की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो सड़क पे आ जाते हैं. रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कब मैं जीतूँ कब मैं नहीं जीतूँगा. दैट इज़ वाई वी डिफाइन द रेशियो variable reinforcement schedule is that type of schedule of reinforcement in which the reward is given after unpredictable number of responses. एक इंडिविजुअल ने टास्क कोई परफॉर्म की तो 7 रेस्पॉन्सेस के बाद उसे रिवार्ड हासिल हो गया, तो दूसरी टाइम उसे 11 रेस्पॉन्सेस दे के रिवार्ड हासिल हो गया. तो उसी इंडिविजुअल को थर्ड अटेम्प्ट में 20 रेस्पॉन्सेस दे के रिवार्ड मिला या रीइंफोर्समेंट मिला. चौथी बार उसे यानी कि 25 रेस्पॉन्सेस देने के बाद रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट मिला. दिस इज नोन एज वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट. Dear students, if you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.